Good morning, dear students. Welcome in online classes. Dear students, today our topic is Reformation. What is Reformation and how the Reformation is started? Actually, Reformation is a movement. What is? It is a movement. After the Renaissance, Roman Catholic Church and their principle and so many things those are going on into the early 16th century. Martin Luther started the changes and the Reformation into the traditional thought and beliefs. He also challenged the authority of church and their pope. So the Reformation is normally going on into three ways. First, Reformation challenged the church, and then after church was split into two parts, namely the Roman Catholic Church and the Protestant. The Reform movement was called Protestant, means those who believe into the changes of the Catholic Church, they were known as the Protestant. The Protestant against the deviation of the Church and the Roman Catholic Church. Secondly, it has also gripped the political impact and political dimensions also. Ruler of European countries resistant Pope interference in the political and administrative affairs of the kingdoms. They wanted to be free of the Pope dominions over them, therefore they supported this movement. Means जो रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जो उसके पोप के अगेंस्ट से रिफॉर्मेशन मूवमेंट मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया था, उसमें राजाओं का, किंग का, राजशाही तंत्र का भी, रूलर का भी बहुत बड़ा योगदान था. बिकॉज द रूलर आल्सो वांटेड टू फ्री फ्रॉम द पोप डोमिनेशंस, क्योंकि पोप क्या करते थे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली both types they always interfere into the personal matter of the politics, in the personal matter of the kings. So the king also wanted to support the Reformation. I hope that you all are able to understand, dear student. And third point is very important for the Reformation and the changes. The Reformation led by Martin Luther also produced a counter Reformation. What is counter Reformation? Some pious praised clergymen of the Catholic churchmen started reforming rather than joining the Protestant. They was called the counter Reformation. मतलब एक ऐसा सिलसिला चलने लगा मार्टिन लूथर की बात से कि बहुत सारे पोप प्रिस्ट कुछ ऐसे भी थे, दे बिलीव इनटू द चेंजेस ऑफ द ओल्ड थॉट, ओल्ड ट्रेडिशंस. आपको पता होगा सेल ऑफ इंडिजीज चर्च के नाम पर बाइबल को गलत तरह से पेश करके जो पोप थे वो क्या करते थे, लोगों का हेवन का टिकट डिवाइड करते थे, हेवन का टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिसको लोग ओल्ड बिलीफ, ओल्ड थॉट की वजह से उसको परचेज करते थे, क्योंकि दे ऑल आर बिलीव इनटू ब्लाइंड फेथ एंड दे आल्सो दे डिड नॉट अबाउट दैट व्हाट इज द रियल टीचिंग, बिकॉज दे ऑल आर ट्रेट. सो मार्टिन लूथर स्टार्ट द क्वेश्चनिंग अगेंस्ट द पोप and write a book known as the 95 Thesis. So this is the three important dimensions. Those are firstly impact on the church, then after political, and after that counter Reformation. So if you see that what is the meaning of Reformation, the question is asked that what is the meaning of Reformation, normally the answer is the Protestant movement against the deviations in the Catholic Church led by Martin Luther's European kings who resented Pope's interference in their status. This movement is known as the Reformations. एक्चुअली मार्टिन लूथर कहाँ का था, जर्मनी का था, एक थियोलॉजिस्ट भी था. इसने 95 कंप्लेंट्स या थीसिस कह सकते हैं कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट लिखा. सून पीपल ऑल ओवर यूरोप वर डिस्कसिंग दीज आइडियाज़, क्योंकि मार्टिन लूथर का जो आइडियाज़ था, जो 95 थीसिस था, इस पर यूरोप की लोगों की नज़र पड़ी और उस पर डिस्कशन होने लगा, तमाम तरह के आइडियाज़ आने लगे और लोग मार्टिन लूथर को सपोर्ट करने लगे. और उसी के बाद से चेंजेज स्टार्ट हुए. पोप और पोप के द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल में, चर्च में बहुत सारे रिलीजियस चेंजेस हुए. इसी को हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मेशन मूवमेंट. ओके, लेट अस सी what was the causes of the Reformation. This is a very interesting question. Many times the question is asked, what is the causes of Reformation? The first of all, I hope that you all are familiar with the word Renaissance. The first causes of the Reformation was Renaissance. Renaissance क्यों था, क्योंकि after the Renaissance the peoples are aware, they believe on the scientific lines and scientific knowledge. So after the Renaissance the Bible translated into local language and it is easily and cheaper distributed among the citizens. When the peoples are teach and see that what is given by Lord Christ
Then they aware what is distortions in Christianity. So the learned man raised a strong voice against what they regarded as abuse of power in the church. रेनेशा ने क्या दिया? रेनेशा ने इन लोगों को जागरूक किया, अवेयर किया. क्यों? क्योंकि इंसान रेनेशा के बाद से क्या स्टार्ट किया? इंक्वायरी करना शुरू कर दिया, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया. और इंक्वायरी क्वेश्चनिंग जैसे जैसे करता गया उसका नॉलेज बढ़ता चला गया और साइंटिफिक थॉट पर बिलीव करने लगा. सम पीपल्स नाउ बिगिन टू क्वेश्चन द सुपरमेसी ऑफ द पोप. बहुत सारे लोग उसमें थे जो पहले इलिटरेट थे. इलिटरेट होने के बाद जब वो किताबों पढ़ना जान गए, पेपर अवेलेबल हो गया, तो उन लोगों ने पोप की अथॉरिटी को चैलेंज किया और उनसे क्वेश्चनिंग किया. और बाइबल को ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेज में जब लोगों के लिए पास डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि पेपर भी अवेलेबल हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस का खोज हो चुका था, तो लोगों ने पढ़ा कि वास्तव में जो रियल टीचिंग है बाइबल की, वो पोप और उसके प्रिस्ट या उसके क्लर्जीमैन हमको नहीं बताते हैं. वो हमारे ऊपर तरह तरह के रिचुअल सेक्रीफाइसेस कराकर हमसे वो धन लेते हैं. ये सभी का सभी गलत है. लोगों ने पोप और उसकी क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, जो पीछे वो लोग खिलवाड़ खेल रहे थे, उसके अगेंस्ट लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाना शुरू किया. So the first reason is that Reformation, what was the cause? Renaissance. And then after, secular and humanist attitude. Okay, the dawn of the secular and humanist attitude in the ease of Renaissance brought about two significant changes. Yes, लोगों की सोच अब धर्म के परे या धर्म से आगे हो गई, सेक्युलरिज्म होने लगा. कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होना चाहिए. The secular worldly affair gained the prominence over the theological and heavenly concern, and man become the measures of all consideration. Man's life, his nature, his betterment in the present world become more important than in future life. Means इंसान ने इंसान की वैल्यू समझी कि जो कुछ भी बना है, जो प्रेजेंट है, ये सभी इंसान के लिए है. जो प्रेजेंट में है पहले हम उसे सही करें, फिर हम फ्यूचर की चिंता करें. लेकिन चर्च, पोप और उसकी क्रिश्चियनिटी में जो टीचिंग देते थे वो फ्यूचर को लेकर लोगों को टीच करते थे और उन्हें कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते थे, अंधविश्वास पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते थे. सो दिस सेक्युलर एंड ह्यूमैनिटिस्ट एटीट्यूड आल्सो ब्रॉट द वे फॉर द रिफॉर्मेशन. आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. Now next topic, deviations in the church. After the early Middle Ages, the Pope and the churchmen led the pious and simple life. They earned people's respect, but as the time passed, some degree of negligence and decay occurred. Some priest officers of the church secured high position in the church. Gradually with the time, the authority of the Pope, the supremacy of the Pope is continuing increases day by day. But according to the Bible, according to the function and work of the church, they led the simple life before that, means before the Renaissance. लेकिन जैसे जैसे पोप की पोजीशन, इनकम बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी लाइफ भी चेंज होती चली गई. वो लग्जरियस लाइफ जीने लगे. जो उनके रियल टीचिंग देने का काम था, सिंपल लाइफ में रहने का काम था, वो धीरे धीरे भूलते चले गए. और जिसका नतीजा क्या हुआ? The chief of the church, those are known as a pope, in every state was to pay the first year total income to the pope as anent and the first fruit. Some officials sold various type of the certificate of pardon known as indulgences. कुछ पोप तो ऐसे थे, खास करके इटली में, इटली के जो पोप थे, और कुछ रोम एम्पायर के, जो हेवन का टिकट देने लगे कि आप चोरी करके आओ, पाप करके आओ, मैं आपको इंटेलिजेंस एक पेपर दे रहा हूं, इसको आप परचेस कर लेंगे और रख लेंगे, सारे पाप आपके खत्म हो जाएंगे. ओके, सो द पोप एंड देयर अथॉरिटी, दे ऑल आर misuse their power and position, and they all are corrupted. When the people were aware, they started immediately change into the church and the authority of the Pope, so they support to the Reformation. And then finally the fifth point, the immediate causes. Sale of indigenous in Wittenberg by Thistles, who was an agent of Pope Julius II. These certificates of the pardons, अपराधी को क्या दिया जाता था? एक इंटेलिजेंस दिया जाता था, जो अपराधी खरीदने के बाद अपराध से मुक्त हो जाता था. इसको किसने चैलेंज किया? मार्टिन लूथर ने, थ्रू हिज 95
thesis. Martin Luther pasted the paper on the different walls of the church and asked the church and their pope, if you write your teaching is right, so give me answer of different questions. But no one, any popes, accept the challenge of Martin Luther, and finally Martin Luther started the Reformation in Europe. Through the 95 Theses, Luther challenged the Pope and wanted to completely openly debate with him. लूथर ने चैलेंज किया, अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तो आप मुझसे डिबेट करो, डिस्कशन करो, अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ आप सही हैं। ऐसी जब स्थिति हुई तो कई सारे पोप अपने को किनारे करने लगे, अपनी चर्च की जो लग्जरियस लाइफ थी उससे वो किनारे करने लगे और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलग पाने लगे, और इसका फ़ायदा कॉमन पीपल ने उठाया। लोगों ने जर्मनी, स्पेशली जर्मनी और इसके बाद इटली, रोम, यहाँ पर पोप और उसकी अथॉरिटी के अगेंस्ट लोगों ने रिवोल्ट, स्ट्राइक और चेंजेस के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस चर्च में स्टार्ट हुए। तो पहली चीज़ तो ये आती है, आफ्टर द रिफॉर्मेशन व्हाट वाज द चेंजेस इनटू द रिलीजन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Impact of reformations on Europe. Reformation created a great impact on the different aspects of life in Europe as noted below. See that religious life. What was the change into the religion? It is known as the counter reformations. जो religion में change हुआ उसे हम बोलते हैं counter reformation. After the reformations, counter reformation, in order to restore the reputations of the Catholic Church, some pious and dedicated Christians, including some popes, adopt certain reforms in the church. This came to be known as counter reformation. पूरे यूरोप में इसके धर्म के ऊपर रिफॉर्मेशन का बहुत गहरा असर पड़ा। बहुत सारे पोप और बहुत सारे डेडिकेटेड पर्सन्स चर्च और उसकी अथॉरिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने के मूड बनाना शुरू कर दिए, और यही चेंजेस क्या कहलाने लगा, काउंटर रिफॉर्मेशन। क्या क्या चेंजेस हुआ रिलीजन में? फर्स्ट ऑफ ऑल, the sale of indulgences was stopped. The sale of indulgences was stopped. अब किसी को भी, किसी भी अपराधी को, किसी भी क्रिमिनल को जो पेपर इंटेलिजेंस का सेल होता था उसको पूरी तरह से स्टॉप कर दिया गया कि ऐसा कोई भी पेपर पोप या क्रिश्चियन किसी भी चर्च से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सेकेंड, चर्च ऑफिसर वर टू बी अपॉइंटेड ऑन मेरिट. नाउ द ऑफिसर्स ऑफ द चर्च अपॉइंटेड देयर मेरिट. थर्ड पॉइंट, सेमिनार्स टू एडुकेट एंड ट्रेन द प्रीस्ट वर स्टार्टेड. सेमिनार के थ्रू जो एजुकेटेड पर्सन्स थे उनको ट्रेनिंग देकर एज ए प्रीस्ट अपॉइंट किया जाना शुरू किया गया। मेरिट के अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट किया जाना शुरू किया। नो फी वर टू बी चार्ज फॉर रिलीजियस सर्विस. चर्च अब किसी भी तरह का कोई भी फीस रिलीजियस सर्विस के लिए नहीं लगा सकता है। Sermons were to be given in legal and local languages of the people. अब जो भी sermons होंगी, जो भी प्रवचन होंगे, जो भी कथाएं होंगी, जो भी टीचिंग होगा वो लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा, पहले ऐसा नहीं था। ओके, सो दीज ऑल आर द मेजर चेंजेस इनटू द रिलीजन्स। आफ्टर दैट द यूनिटी ऑफ द क्रिश्चियन स्प्लिट। इसके बाद से जब चेंजेस शुरू हुआ तो जो ओल्ड बिलीव के थे, जो ओल्ड लोग थे जो चर्च और उसकी अथॉरिटी को ब्रोक नहीं करना चाहते थे उनके बीच में, और जो लोग चेंजेस में बिलीव करना चाहते थे, सुधार में बिलीव करना चाहते थे, उनके बीच में दो ग्रुप हो गया जिसको हम बोलते हैं कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट ग्रुप। द चर्च एंड द फॉलोअर ऑफ द चर्च डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप नोन एज द कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट। नेशनल चर्चेस इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन चर्च वर एस्टैब्लिश। यूरोप में और बहुत सारे कंट्रीज में नेशनल चर्चेस इस्टेब्लिश होने लगी। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द पोप। ईच एंड एवरी वन गो एंड एंजॉय एंड डू देयर वर्शिप विद द अगेंस्ट ऑफ द गॉड। किसी के ऊपर कोई फाउंडेशन अब नहीं होगा। एंड नाउ दे हैड देयर ओन सेक्रेमेंट्स एंड प्रिंसिपल, जिसकी अपनी एक अलग प्रिंसिपल और मान्यताएं होती थी जो नए चर्च इस्टेब्लिश किए गए। द सुपरमेसी ऑफ द पोप gave way to the supremacy of the Bible। जा चुका, पहले सुपरमेसी प्रभुत्व जो पोप का था वो अब खत्म हो चुका। अब लोगों का प्रभुत्व और लोगों का विश्वास, लोगों का
बिलीव बाइबल के और उसके टीचिंग पर बन गया. सो आफ्टर द रिफॉर्मेशन इन क्रिश्चियनिटी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, and the old belief and thought changes. Now political impact. What was the political impact of the Christianity? This is also very important. Long wars amongst European nations started. After the changes, both Roman Catholic and Protestant became exclusive enthusiastic about their ideas. So the result in long and bloody religious war started. King Philip II of Spain sent his invincible Spanish armed in 1588 to be England and end the Protestant there, but he was defeated. Then he tried to suppress the Protestant movement in his own dominion of the Netherlands and declare war against it. But the Treaty of Westphalia in 1648 AD resulted in acknowledging the independence of Holland. Means the 30 Years' War and many other holy wars started between Roman Empire and the Protestant, Roman Catholics and the Protestant continue. The war is started in Europe. Many of the European countries like that, England, France, Spain, Netherlands, they all are involved into war, and finally so many newly independent nations also appear. Roman Empire, the main objective of which was to force the Protestant state of Europe to become Catholic. Once again, this war resulted in the killing of thousands of both the side and ended with the Treaty of Westphalia in 1648 AD. Some Protestants left for USA. So first of all, in political impact, continued 30 years war going on many European nations for the supremacy of the Protestant and the Catholic. Civil war also started. Both Reformation and Counter-Reformation movement became violent and aggressive. सिविल वॉर लाइक सिचुएशन, देश के अंदर ही वॉर होने लगा रिफॉर्मेशन की वजह से. वायलेंट एग्रेसिव रिजल्टिंग इज ब्लडी सिविल वॉर amongst the people, especially in France, Germany and Italy. They all are engaged themselves into the civil war, supporting the two sects because someone believe into the Protestant and someone believe into the Catholic. This civil war brought loss of life, property and obstructed पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. इस सिविल वॉर ने, जो कि फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में स्टार्ट हुआ, इसने शांति, सुरक्षा, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया. लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. देन आफ्टर राइज ऑफ नेशनल मोनार्चीज, रिफॉर्मेशन कॉल्ड नेशनल मोनार्चीज टू बी राइज. दोज रूलर हु डिस्प्रूव्ड द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द पोप सपोर्टेड देयर ओन इंडिपेंडेंस. जो राजा, जो रूलर थे, जो चर्च के इंटरफेयर को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करते चले गए. द रिफॉर्मेशन प्रोवाइडेड देम विथ अ चांस टू बिकम फ्री ऑफ द पोप. रिफॉर्मेशन ने राजाओं को हक में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया कि अब राजा या रूलर इंडिपेंडेंट हो गए, उनके ऊपर पोप का कोई बाउंडेशन नहीं था. इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट चर्चेस कम टू बी स्टैब्लिश इन दिस कंट्रीज. बहुत सारे देशों में इंडिपेंडेंट चर्चेज स्टैब्लिश की गई, वहाँ के राजाओं ने कराया. किंग हेनरी 8 ऑफ इंग्लैंड गॉड कंट्रोल ओवर द चर्च लैंड एंड प्रॉपर्टी. हेनरी 8 जो इंग्लैंड का राजा था, उसने चर्च की प्रॉपर्टी और चर्च की जमीन को कंट्रोल किया. एक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मोनास्ट्रीज, एक कानून पास करके सारी चर्च की प्रॉपर्टी और लैंड को जब्त किया. ही मैरिड कैथरीन ऑफ Aragon, his brother's widow, against the wishes of the Pope. So these all are the changes into the national monarchies. Formation of USA is also established after the Reformation. अमेरिका का नाम चेंज होकर क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. एंड नाउ USA started the idea of the national states and welfare state. So dear students, then after social impact, individualism is more important than any other things. Individual is more important than any other thing. Man's life, his physical and spiritual needs, his problems and their solution come within the focus of the consideration of authorities. Means रिफॉर्मेशन ने लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस ला दिए. इंसान को महत्व दिया जाने लगा. मैंस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स. इंटेलेक्चुअलिज्म, रिफॉर्मेशन ने इंटेलेक्चुअलिज्म को स्टार्ट किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ?
intellectual activities start हुई. The right of man, liberty, equality and fraternity begin to states as a result of it. रिफॉर्मेशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी को इस्टेब्लिश किया, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया, रिपब्लिकनिज्म को, वेलफेयरिज्म को, सेपरेशन ऑफ पावर को, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाया. मीन्स सो मेनी चेंजेस इन टू द सोशल लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल. रेशनल आउटलुक. Under the impact of the Reformation, the people become more rational in their outlook. This is very important. Blind faith, fatalism gave place to reason and scientific understanding. The people were believed on the scientific understanding of the things around. They enabled the question European think, argue freely and accept anything only if it appeared to their regions. So these all are the important impact on the social life. Economic impact. After the Reformation, the economical balance is also developed. Each and every nation, the main goal was that to increase the welfare of the common people. So the government run according to the maximize welfare of the common people. So economic impact of also most of the important economic rationale for the mercantilism were to establish the colonies outside of Europe. The growth of European commerce and industry relative of the agriculture increases the volume of breadth of trade and increase in the use of metallic monetary system. So gold and silver relative to the better transactions, economic relations, trade activities, बैलेंस एक्टिविटीज और कई सारे सुधार भी हुए इकोनॉमिकल फील्ड में. एक देश दूसरे देश से ट्रेड करने लगा, कॉमर्स करने लगा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटल इनकम बढ़ने लगी, डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ने लगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ने लगा. सो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बढ़ा. मेजर इम्पैक्ट ऑफ मर्चेंटाइलिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द फेडरल इकोनॉमिक सिस्टम गेव वे टू न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर. Vigorous trade and commerce, money transaction, financial institutions like the worker guilds and bank develop in Europe. So many banks established. New emerging business and industry started. So the Reformation also give the great way for the development of trade and economics in different parts of the world. State finance commission established in many of the different countries. Technique, research developed. Finance developed, defense of the country now increases. So Reformation provided good incentive for economic development, and Reformation also brought the colonialism. Many of the European countries started to develop the colony into the different nations like that. England, France, Spain, Portugal and Holland became colonial power in the world. They acquired colonial possession in the many parts of the world. They set up their trading companies like England East India Company, British East India Company, you know very well, to trade with other countries. Through trade and introduces, they set up their empire in Asia and Africa. So colonialism is also developed after the Reformation. Many European countries developed the trade and also controlled the many Asian and African countries. Christian missions went to abroad the spread of this faith, Protestant or Catholic. Thus, Reformation indirectly encouraged colonialism. It also led to the dawn of modern age in due course of time. और जैसे जैसे समय बीतता गया, colonialism के through हम modern age की तरफ बढ़ते चले गए. So dear students, please one time again watch the video. This is very important. It is also coming in your third term examinations. Impact, political, religious, and also what was the role of the Martin Luther. So please one time watch the video and after that complete the exercise of this chapter. Thank you.